1 HP है legend heal भी है 100 HP है Last player standing. एक किचन है 1 HP One bullet per enemy. That should be enough, yes? अगर ऐसा वर्क नहीं करता तो मैं ही खेल लूँगा पीक देना इस बार मैं भी तेरे साथ ही खेल रहा हूँ 170 है रेना मिड There. Here. एक ही बार Be faster. रेना हिट था मिड किचन नहीं आ सकते ना किचन नहीं आ मिड मैंने ब्लॉक कर दिया वो लोग ए ही आएंगे इजी रीटिंग नहीं रहना वहाँ पे मैंने वॉल कर दिया अरे गन ले Spike planted. लेट आ सकते हैं यहाँ पे वो डाल रहा हूँ Over there. जिससे क्राउच हो जाए No escape. It's a kindness. One enemy remaining. Last player standing. बॉल ले बस अरे वो टाइम नहीं है ये क्या टाइम है आई गेस वेल प्लेड हो गया नाइस वन Ultimate ready. Combat is a means to an end, and we are the means. तो खेलना मिड फाइट को क्या बी ये मल्टीपल पीछे आ जाना तेरे ट्रेप Sensor tripped. Hold them to their grave. Reeling them in. Target escaped. Nowhere to run. Sorry यार वो 109 siege they can rotate क्या अरे आओ हक दिया मैं नाइस ये भी One enemy remaining. शॉट ओमन Last player standing. स्मोक में गया वो ए जाएगा स्पॉन से 30 seconds left. रश्मि वो गया ए Spike planted. Trap destroyed. ऊपर गया बेल्ट गया वो बेल्ट गया बेल्ट हाफ कर ले Clutch. बेल्ट ही था तेरे पे चढ़ गए क्या Please do not mistake my smile. I take this song Hello? very seriously. एक पे
चढ़े तो एकदम थे यार। पीछे से खेल रहा था, कैसे मर गया यहाँ से? अरे मैंने ही पीक दिया था सेज को कवर देने के लिए। अच्छा ओके। अरे वो गलती से वो क्या है पैनिक के कारण मैंने वो क्या है इसका नाम, ये ग्रेवनेट है ना, ग्रेवनेट बाउंस होके सेज पे गिर गया। मर जाता वो इसलिए। Get out of my वो way. अकेला है भाई तेरा? Wall raised. कोई नहीं कोई ये क्या? हाँ अभी है। I think भी No surprises. Barrier deployed. No surprises. Throwing net. 78 over. Targets deep. नाइस। Blast. अरे इसको तोड़ना से, इसको वॉल तोड़। फोल्ड करना मैं बैक स्टैब आ रहा हूँ। Over there. हाइड है, वॉल तोड़ा हुआ है। अरे आएगा, पिक मत दे इसमें। There. There. One enemy remaining. रोटेट कर गया वो। कर दे। Spike planted. Last है, last। चला जाओ। Weapon here. No charges left. There. डिफ्यूज पे डाल इधर क्लोज इधर। नाइस राउंड। Thrifty. We need nothing but our gifts. Deep breaths, everyone. Your hearts are pounding. लोग मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा एग्रेसिव जाके फाइट। ओके पर एक्सेप्ट तेरा कुछ हाँ दे कि देना वो थोड़ा। डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ। हाँ, डन। तो वहाँ वाला एंगल ही देखना पड़ेगा तेरे को। Wall raised. अंदर ट्यूब आ सकता है। नाइस। ये क्या? 5 ब्रो साइड पे सपोर्ट You देना, will तो not काफी पीछे खेल kill रहा my है। allies. Got him. वेट करना। अरे क्या भाग रहा है Spike ऐसे? planted. एक क्लोज था। There. Gun here. स्मोक में Throwing net. Last player standing. फक 120 ये क्या पे है? ए पे खेल लो एक में, The मैं खेल last रहा thing they'll see before they die. चैम्बर तू ऑफ लेके यहाँ पे Over खेल there. येलो के ऊपर एक अर्ली पिक ले, पीछे आ बस। अरे चैम्बर 5v4 कर रहे हैं तुम लोग, क्या कर रहे हो भाई? Who will I spot first? Rena bro, can you play here? Lariat here. Go go. इधर स्मोक करना ब्रो, कर सकता है तो। और नेवर माइंड, आई एम फक्ड ब्रो। Sensor trick. प्लेइंग ऑन योर सेल्फ। Healing. Spike down A. मेन Spike spotted. No escape. एक पीछे बोल के पीछे। Enemy remaining. Down. Go and meet your mate. The symphony of death. Can someone get this? You get used to it. Need a drop. Thank you. इसको भी दे दो यार, सेज को।
Thank trust me, you just play there, okay? I will cover you, don't worry. Thank you. चल तेरे लिए एक ऐसा जरूर लगाता हूँ, देख देख अगर तेरे को कोई पुश करेगा ना, मेरा ट्रैप सेंसर होगा, तो इजी यहाँ से पिक देके एक पिक लेके डिसमिस कर सकता है। डन 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 डन। ये बस इजी 5d4 करो भाई, सिंपल है। आने दो उन्हें बस। पर यार इधर तक आएगा। They are coming. Oh no. मैं स्पॉटेड नहीं हूँ। Mid. One mid कर। Enemy spotted B. Spike Return down to B. dust. स्पाइक है बीच में। एक मिनट। 80 रहना, गन नहीं होता रहना क्या? One enemy remaining. बी पे। Continue on our path. It वो is सेंसर right. बढ़िया है ना? हाँ। कंकस हुआ था क्या वो? Need a मैं drop. इधर तक आ गया फिर वो टाइमिंग मैंने उसको पहले ही मार दिया Someone तेरे get this. सेंसर के पहले ही मार दिया जरा। तो वहीं खेल। तेरे को कवर नहीं दे पाऊंगा ना वो यहाँ तक आएंगे तो तेरे को आके ना मार दे यहाँ तक। अरे मैं कर लूँगा वो तो। ठीक है। बस तेरे को एक पिक लेके पीछे आना है और कुछ नहीं। War race. यार भाई तू यहीं होल्ड कर। बेट पे वॉल डाल, ओके? डोंट वरी। Multiple enemies B. हील। मेरे पे अल्ट है, मैं एक को ले लूँगा। कमिट है तो बता। अरे Spike planted. मैं प्लान Your कर duty रहा is not over. वेट वेट। एक क्लोज है। 80। Imposter killed. केयर मिड लेट। One enemy remaining. Down. Still in sight. Valiant effort. डिफेंस कर रहे ना? हाफ कर ले हाफ कर ले। Defuse the spike. Thank you. Weapon here. There are no rocks. Watching here. Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. What about I play here? No. Play with my drill. अरे मत लगा, ये जरूरत नहीं इसकी, हटा दे। कहीं और लगा चैम्बर, हटा दे इसको, कहीं और लगा। अरे लगा ही क्यों रहा है भाई यहाँ पे साइड पे? जरूरत फुल सेटअप कर रहा है। Barrier created. ये रिवील आया। हाँ आने दे। तू वहीं कर ठीक है। ये जाओ। Barrier deployed. अरे Spotted A. मेरे को हील देगा? For you. वो आ गया। Headshot. Spike down A. Nice. One enemy remaining. Flawless. Nice round. Unscathed. Well I'm played. delighted. Weapon here. Last round in the half. We cannot keep our goods after this. Spend all. पे 3 सेंटिनल है भाई, अपन डिफेंडिंग इतनी निकाल सकते हैं। रेना भाई Watch this. वो अब्यूज कर ही नहीं पाएंगे भाई, तू टेंशन ही मत कर, वो अब्यूज कर ही नहीं सकते। कोई टेंशन नहीं, ये साउंड है। One mid. Cutting their vision. And stay Woman down. mid था। There. Nowhere to run! Sensor down. You will not kill my allies. ये पे चैम्बर का राउंड है। वेट
Jet spotted. chamber coming. Falling back. One less. Nice. Spike down. Attacker spawn. One enemy remaining. Nice. Jet. Let's go. My Nice. ult is not ready. यार वो मेरे को उल्टी मार रहे यार. Switching अरे sides. कोई नहीं तो अल्ट वेस्ट हुआ ना भाई. उल्टी मार के निकल रहे वो खोपचे में से मेरे को. There. Still I got trainer bro. बढ़िया. सुनो प्लांट हाँ, ऐसा देना ओपन. Over there. सामने वॉल कर देता हूँ मैं इधर ऐसे. ओपन प्लांट ही कर. Here. वॉल कर इजी प्लांट. और मैं मेरे प्लांट पे मैं वो लगा दूंगा मेरा ये कंकस वाला. ठीक. ये सोनिक सेंसर वाला. I got one flash हाँ guys. बैक स्टेप पे अपना ट्रैप यहाँ लगाना चैम्बर यहाँ पे. Over ये- there. We ये go. लगा दे. वॉल कर दी उसने राइट से. Okay. Close Weapon them. here. Cutting the Enemy spotted A. Heal दे. नहीं है Can't नहीं use this yet. अरे मैं नहीं आ पा रहा. Hostile down. there. Plant का. एक ऊपर एक ऊपर. Created. एक साइड पे There. रेना ओवर हील्ड है. एक अंडर. अरे नहीं थ्रो हो गया पिक मत One enemy remaining. अरे. Last player standing. नाइस. नाइस राउंड इजी नाइस गेम. अंदर आ सकते थे क्या डेढ़ लोग यहाँ से? There. कहां से? ये जो अरे तुमने वो डाला था. गैप रह गया ना वो. me. देखिए ऐसा Over ये there. वी बना ये वी बना तो ये गैप रह गया तो आ सकता. लगा मेरे को सब तो अंदर. डेढ़ लोग. अरे मैं डेडलॉक खेलता नहीं भाई मतलब मैं एक नॉर्मल डेडलॉक के तरीके. तो डेढ़ लोग मेन है. नहीं डेडलॉक में नहीं भाई. अच्छा खेला ब्रो. डिफेंस में अच्छा ही खेला. Feeling sight. चलो ग्रेवनेट डाल रहा हूं Throwing net. पीछे. ग्रेवनेट है कोई नहीं. गन को कवर दो गाइस कवर दो उसे. Spike planted. हील देना सेट. नहीं है यूज कर. अरे बुलडॉग ले. मेरा बुलडॉग ले यहाँ से. Weapon here. नहीं है रेना है वहां पे. अरे शेरी पे. Opponent. येलो आ गया. अरे बुलडॉग से भाग दिया मैं बे. One Sorry. enemy remaining. 35. माय बैड. क्यों हग रहे हो भाई. एम इजी था. सोवा वहां पे भाई बैठे मार दिया मेरे को बताओ. अरे यहाँ पे मैं पे ग्रेवनेट डालता हूँ जेट बैक साइड. तो यहाँ पे ना स्मोक करके डैश कर ठीक है. Let them try to get through me. सेम करो पी करो. उनको लगेगा अपन नहीं आएंगे पर अपन पी जाएंगे भाई. Hey. इजी वॉल प्लांट दे. ऐसा कर जेट एक स्मोक यहाँ पे यूज Caution करना here. डैश के समय और एक स्मोक Caution यहाँ दे here. देना. सेज यहाँ पे Over वॉल there. करके प्लांट कर देगा. ना. सेज तू वॉल पे खेल Caution Bonne here. chance, mes हाँ. amis. ठीक है. है नहीं हाफ कर लो. इजी हो जाएगा. पे रिप्ले. येलो कैरियर. Enemy B. Feeling sight. डाल रहा हूँ Reloading. डैश करेगा. No escape. कर यहाँ पे आउट. अरे भाई स्पैम हो गया उसके अंदर. Spike down B. Reloading. थोड़ा होल्ड. पिक पे खेलो. There. क्या है गाने में? आता हूँ. Backstep. Last player standing. Long. ऐसे थोड़ा है ना बीपे डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये अपना स्मोक नहीं है ना यहाँ. Let's not complicate it. यही करते बेटर रहेगा ब्रो. सही है.
हम यहाँ से निकल भी जाएंगे ना ये पार्ट से, वो यहाँ से ओप मारेगा राउंड या फिर आउटलो मारे। ये करो फास्ट में, ये एबिलिटीज भी अच्छा है। एक साइड सेज वॉल बना देगा, एक साइड 2 ईयर डाल दे अपना वॉल। गिव मी योर स्पिन ना ब्रो। Can someone get this? Continue to overwhelm them. बाय द वे वो रेना हेडशॉट खेल रहा है। There. मैंने खुद को कर दिया, मैंने खुद को कर दिया, सॉरी। Cutting their vision. टॉप पे स्क्रीन पे टॉप। Cutting their vision. Ultimate ready. Barrier created. Light planted. My ultimate loading. येलो एक और एक Throwing. ए मैं ग्रेनेड डाल रहा हूं। एयर फ्लैंक। अब बहुत यार चलो अल्ट पे One enemy remaining. 80 80 80 80 है। हेवन गया There. अरे यार 80 है। इस सेविंग ब्रो। Sound sensor up. रन आउट ए Wind. Show me where to go. Need a drop. इकोनॉमी नहीं अपने ब्रदर। वापस दिया सेज। Can someone get this? हेड लोग भाई एक बट क्यों हो गया? W ही नहीं दबा भाई, पता नहीं, मैं तो और आगे आ रहा था। I have your मैं back. ऐसा पता पीछे जाता AW से। अरे यहाँ पे ड्रॉप अरे ड्रॉप मर जे ड्रॉप मर आएगा, वापस आएंगे। प्लेस कर रहा हूँ। Still in sight. आया क्या फॉरवर्ड? कोई नहीं आया। नेक्स्ट टाइम आया। एक इसके पीछे है। नाइस। Last player अरे standing. Spike down A. मेरे को ब्लॉक कर दिया तूने। तू मेरे पीछे है मेरे। अरे भाई मैं उसको अल्ट कर रहा था, तू दे रहा है अल्ट पे वो रहना। नहीं पूरी तो अल्ट में हूँ। Bad for shit. The battlefield changes with every play. चलो इजी पिक से सेव कर लो। भाई सेव का कर और मेरे को। दिला। Use a drop. बी का और चेंबर अल्ट दिला पे दो खेल मेरे लेना, इससे अच्छा ब्रो। चेंबर अरे चप्पा सबको शेरिफ पाई देते ना, Thank you. शेरिफ ले लो, सब पाई मांग अरे लो। सेव ही रखते ना, सेव ही रखते। वो 1-2 मारेगा, उसके गन उठा लेंगे ना हम लोग। हाँ ये भी कर सकते हो। अबे आ जा देता है। मो स्लोप There. छोड़ो ना यार उसके लिए। ए फॉरवर्ड There. और करके ऊपर येलो येलो येलो। Watch this. रुको रुको ऐसे मत जाओ यार, एक पिक के चेंबर को मारना। अरे 44 यार हेड। There. ये सारे इधर आ गए पे ब्रो की भाई। कहाँ है? तू डैश करेगा क्या? येलो येलो Over there. करता हूँ 2 में वेस्ट हो जा। स्लो होने के बाद। इधर सेज का वॉल भी आ गया है। आई थिंक रोटेट करते हैं बेस्ट। रुक रुक मैं पीछे डाल रहा हूँ ग्रेनेड डैश कर। Throwing net. कर ले वॉल इधर। Healing Nice one. down. अब ड्राफ्ट कर। येलो एक क्लोज है, एक क्लोज है, तो बस क्लोज है। प्लांट नहीं कर पाऊंगा यार मैं। Barrier deployed. There. मत जा मत जा मत जा। मैं गन लेने का ट्राई करता है। तो ये क्या नाम है? चेंबर पे क्लोज है, तो बस गन है मेरे पास है। गन दे दे, सेना को दे दे। ये ले ले। अरे मेरे Gun here. 30 seconds left. नेक्स्ट। हिल ए बैक साइड से होगा, बैक साइड से होगा। दोनों तो एक किधर है? जेट भी उधर। B. जेट भी है। जा डैश करके मार दे। One enemy remaining. नाइस। मिड मिड मिड। 10 seconds. नाइस। Thrifty. क्या बात है, मजा। I could not have made that easier. गेम ड्यूल जीतो भाई, और कुछ नहीं। Match point. Careful now. Their desperation will be dangerous.
रहना रहना ऐसा कर, एक हाई फ्लैश दे यहाँ पे Over there. इसके ऊपर, समझ रहा है? यहाँ पे Over there. जेट यहाँ पे अपड्राफ्ट करके कर्ली पिक ले ले। चल अब कोई ड्रॉप रोड मारना ये वाला। There. हाँ ये ला, प्लेस करता हूँ तेरे लिए। फ्लैश दे दे। हाँ Keep up. यहाँ पे ट्रैप लगाते हैं मेरे Over माथे। there. In sight. बोलड़ा है। Enemy spotted A. Here. नीचे कूद गए। नहीं आ रही मेरे। Enemy spotted A. Cutting their vision. Barrier destroyed. Wall raised. Nowhere to run! Your duty is not over. Spike down अरे। A. तीनों इधर है। पीछे थोड़ा पीछे। पिक्स पे खेल। बढ़िया। 2v2 है, 2v2 है, इजी। आएगा आएगा। Last player standing. One enemy remaining. Over there. यार सासूबाई थोडीशी रिक्स आहे पण तुमच्याच घरची सून फिक्स आहे. Sound sensor out. त्यांची घरची सून. सासूबाई ये थोडीशी दिखा दे रिक्स ग्रीन। आहे पण तुमच्याच घरची सून फिक्स आहे. त्यांची 30 घरची सून. seconds left. This is when you'll meet your childhood best friends. This is when you'll likely go through your first heartbreak. And this is when you'll get your first job. Around 10 seconds left. अरे नाइस। Attackers win. Pack your bags. Tally your kills. We're heading home.
AC vent here, so at least you can cool when you have no space. Baby man. Light placement here on the top. But hi guys and welcome to another vlog. I'm driving this. This is the 2024 Land Rover Discovery Sport. This is actually the D200 Dynamic SE variant 5+2. 5+2 because it's actually a 7-seater, but Land Rover does not call it a 7-seater. Yes, it is a long name for what is Land Rover's cheapest model. Yes, this is the entry-level Land Rover model, and this is the key of the vehicle, which is the same as other Land Rover models. Unlock the car, lock the car. This is to turn on the light, this is to open the boot, and this is to turn on the hazards. Meanwhile, the car actually has a lot of gloss black finishing, and it has become quite a lot of value for money now. So yes, this could be a better alternative when compared to the Mercedes GLC and the BMW X3. Now straight away, let's open the engine bay because it's quite interesting how they have done the air intake for this car, because it pulls in air from somewhere here. So it pulls it from there, pushes it from there, and puts it right inside here. This is something I've not really seen in many cars, but that's very nicely done, Land Rover. Okay, you can see and feel that this is a diesel engine because the vibrations are obviously there, and this is so glossy. I don't know what. Someone has actually polished it, and I love the fact that they have put this sort of material to prevent heat from whatever. But yes, they have put some thought here in the engine bay, which is a good thing. Earlier they just used Ford engine, so they didn't really use their brains much. There's insulation here. Where does the washer fluid go in? I can't even find that. That's so freaking hidden. Kahin to hoga, yahan par hai. Anyways, let's shut the engine bay and let me tell you that there's a lot of gloss all across. So there's gloss here, Land Rover badging right there. Says Discovery, which again is finished in piano black. In fact, there's piano black finishing here on the bumper as well. This is fake. Why is it fake? I have no clue at all. This is functional, obviously. In fact, there's a functional air curtain here to draw in air and maybe for some aerodynamics as well. That is a towing hook. It gets headlight washers. Wow, because that's a feature. Some expensive Land Rover models like the Vela don't get it anymore, but you do not get matrix LED headlights because that's available in the HSC trim, which is not available in India. This is the SC trim, which is standard equipment. HSC is high standard equipment. All LED lights, dynamic swipe indicators look really very cool, obviously. And coming to the side, I realized that gloss black has been extended all the way, so it goes all throughout the car, which is a good thing, but is prone to scratches obviously. The length is almost 4.6 meters. The wheelbase is slightly more than 2.7 meters. So yeah, the wheelbase is quite long, and the size of the tires 235 55 19. So yes, these are 19 inches, but the HSC gets 20 inches. HSC is not available in India. Red colored brake calipers. Alloy wheel design is finally better, so they have updated the design of the alloy wheels. Yay! You get 6 parking sensors at the front. Says Discovery here, which is not very visible because it's the same as the body color, and it also projects a silhouette of the car on the ground at night when you obviously unlock the vehicle. You get request sensors on all the doors. Says Land Rover right here, and this is a diesel obviously, so you have to put urea here. You get the drill. Meanwhile, if you opt for the accessory of having roof rails, it can take up to 75 kgs of weight. There is a RS5 which is going very loudly there. I think this has become a racetrack right now. Anyways, ground clearance seems decent. This car looks and feels more SUV than its rivals for sure. And when you come to the rear, you will appreciate that there are dynamic swipe indicators here as well. And this is, I think, the Discovery sort of a logo. Meanwhile, the car looks very similar from the rear. Again, they've splashed so much gloss black now, it's crazy. These are the rear fog lights. Meanwhile, you get parking sensors, and you get 4 parking sensors at the rear. Let me count 1, 2, 3, 4, 5. No, 6 parking sensors at the rear. You get a rear wiper washer. It is not hidden like in the case of Range Rovers. High mounted stop lamp. There's a camera here for the clear side camera. That is a shark fin antenna. Yeah, the usual thing where sport is written here. Let me show you the underbody because that is the exhaust. It gets dual exhaust on the left side. Spare wheel is not an alloy. It seems to be a smaller size as well. And there you can see the underpinnings. Yes, very nicely done, Land Rover, because it gets sort of a diffuser treatment here, which is of no use, honestly. There's a towing hook right there. Let's open the boot. Before that, let me show you the camera, which also gets a spray function to clean the camera. That's kind of cool. Straight away, let's open the boot. Now, this is a 5+2, but the problem is the parcel shelf has no place to be kept. So once you remove the parcel shelf to make it a 7-seater, the parcel shelf has to be left on the road like this, hoping nobody would steal it. And right now, I've actually put this seat all the way behind. That seat is completely upright and all the way ahead. Actually, let me show it to you because seat like that, it's impossible for me to put the last 2 rows up. So firstly, this is the maximum legroom. That is the minimum legroom. This is completely upright. This is completely reclined. And there seems to be good amount of space here. The space is not an issue. Under the support is a slight issue though. Headroom,
seems to be adequate enough. There's a hook here, handle, light, and no height adjustable seat belts. Another hook right there says Meridian Sound. Scooped out seat back, magazine holders, provision to put an iPad as well with a USB charging socket too. You have got controls for the air conditioning at the rear, and you've got two USB-C charging sockets, a 12-volt charging socket, some storage space here, AC vent placement here, but I really don't understand how this particular thing works right now. There's a slight hump, which isn't that bad, but yes, the cabin is quite spacious at the rear, so yes, good amount of interior room, which makes it a practical 5-seater at least. Is it a practical 7-seater? I will show you right now. Says airbag here, says airbag almost everywhere possible. So first things first, I'm going to make the seat a bit upright. In fact, I can split the seat into 60-40, and I think I can split this also, so it becomes 40-20-40, and then it gets Isofix child seat mounts as well. Let's move this seat ahead. Yeah, it is a bit of an effort, obviously. Material quality and all is nice. It gets this wood treatment too, nice double stitching as well, and feels very robust. So let's put this seat up, and there you go. So now it becomes a 6-seater, and now it becomes a 7-seater. It also has proper headrest. I can just put them up like this. Now if you notice, boot space has become really very small. This is the warning triangle. There are some things kept right here, which obviously is the toolkit of the vehicle, including a jack. I don't know where Rose is right now, but yes, that practicality bit is also there. Problem is that there's no space as such. Okay, a kid can fit in right there. You get two cup holders as well. You get blower controls. That's right, you get blower controls right here. So yes, the person sitting in the last row at least has some control. Meanwhile, you also get a USB-C charging socket right there. Problem is, under thigh support is really very poor. Getting into the last row is also very difficult. If I just pull this like this, there it folds, and yeah, there it falls down as well. The interesting part is there are buttons right here, which means if I press this button, I can put the seat down too. The only thing is the headrest is colliding right now. So it's a namesake 7-seater, obviously, because to get inside, this thing does not fold. Oh God, this acrobats I have to keep doing today. Now hopefully this will fold right now. Let's do this. Come on, fall. Yeah. Now to get into the last row, how do I do that? I have to climb from certain places. Kaise ghusum bhai? Oh God, this is one of the worst way of having a 7-seater, because the seat doesn't really tumble. Now this seat is on the floor completely. In fact, it's so much on the floor. Let me show you the under thigh. Yeah, what is this? It is absolutely terrible place to be in. I just feel like someone has put a gun on my head and be like, "Baith jai yahan pe bhai." AC vent here, so at least you can cool when you have no space. Light placement here on the top, but no USB-C on this side. There is one on that side. Don't know what is the logic. You get a 12-volt charging socket, but what is this space? I can move this seat ahead using this lever. Yeah, it pushes ahead, and then I get outside. So yes, it becomes quite difficult to enter and exit the car. But for a car of this price, there should have been a sun blind here, but unfortunately there is none. Oh my God, this has been really very difficult today. Hat tip I'm giving you guys right now: do not, and I repeat, do not drink Bonvita, because then you cannot sit in the last row of the Discovery Sport. Where do I keep this? This is such a challenge, na? They should have given it some space at least to keep this. But anyways, abhi filhal ke liye jugaad ke liye I'll keep it like that. I'm scared it might just get stolen, and obviously it gets a powered tailgate as well, and there it shuts. Car looks very similar to how it looked before, so even though this is sort of a facelift, because the interior has changed quite a lot, it doesn't really feel very different when compared to before, which is a bit disappointing. They could have really made a lot more changes to the car. And how do I know what variant it is? It says Dynamic SE Sport D200 along with the engine vehicle number, whatever. You get two cameras here and a sensor for automatic wipers. Those are for lane keep assist, I believe. I'm not sure if this car has ADAS or not, but it has this sort of a panel here which is finished in piano black. I don't even understand the logic behind that, but it is there. It does not have D200 written anywhere on the body. No trim level is mentioned either, and the fog lamps are actually very low down. So that is actually the fog lamp. It's like really down, so you really can't see it. That's the reason I missed it on first go. Now let's get inside. This is 12-way power adjust. That is 10-way power adjust. The HSC actually has 14-way power adjust, and obviously memory seats. So we're going to move the seat there. And the seats are actually nice and comfortable. They were stiff earlier, long back, but I think they have made certain improvements to it, so it's not all that bad.
एक्स ने तुम लोग हमारे पीछे भाग गया भाई, मैं तो भाग गया तुम्हारे सामने। अरे ये कौन? भाग गया भाई, मैं तो भाग गया तुम्हारे सामने। अरे ये कौन? अरे दो है भोसड़ी के। What would happen if a Warzone sweat who's basically never played Apex Legends dedicates 1 month to playing the game? Can I learn all of the crazy movements? Can I drop a high kill game? Is Apex more fun to play than Warzone? Well, there's only one way to find out. Okay, so the first thing I had to do was get a baseline for my skill. I was going to be tracking my progress in 3 categories over the next month: my highest kills in a game, the highest damage badge that I collect, and the number of new movements that I learn. The last one's kind of silly, but I love learning new movements. What a nerd. Now, honestly, I was pretty confident going into the first game, and that confidence only grew when I immediately got a kill on the drop. Oh, let's go. I mean, I had watched hours of Apex tutorials, I knew the best building to land, and I could shoot pretty straight in Warzone. That had to mean something, right? Well, maybe not, because after that, things went downhill pretty fast. I quickly realized that people had a lot of health, and the gun magazines had almost no ammo, which meant I needed to make every bullet count if I wanted to get any kills. But that was easier said than done. Oh god. So instead of destroying the lobby like I thought I would, I spent most of the night running for my life. Please, stop chasing me. No. And I had absolutely no clue where I was going. What is this? Oh my gosh, no way. By the end of the night, my best game was 4 kills that I got from mostly shooting people in the back. I didn't collect any damage badges, and my movement was not great. What had I gotten myself into? I went to bed completely overwhelmed, and by the next morning, I was beginning to think I had made a big mistake. I wanted to play a new game because I've been unhappy with the slow movement in Warzone 2, and gaming just hadn't been fun for months. But maybe Apex Legends was too hard. Maybe I should go back to the game that I spent hundreds of hours playing because at least I was good at it. But unfortunately, it was too late for that. Now, I should mention there are some rules for this challenge. Number 1, I can't get help from friends because I'm not looking for a hard carry. Number 2, I'm only playing pubs, mostly because I don't have ranked unlocked, and honestly, it kind of scares me. What are you just sitting there for? You stupid mother doing? And number 3, I only have 1 month to train. Now, to prep for this month, I did a lot of research, and instead of just dropping into the Battle Royale mode, where I would need to learn the maps, the looting, the mechanics, and so much more all at once, my game plan for the first few days was to simplify. I would just focus on learning the mechanics first by practicing in the firing range and getting into as many gunfights as possible in multiplayer, and once I wasn't a complete bot, I could graduate to learning the Battle Royale part of the game. And the first thing that I wanted to learn was wall bouncing. Now, it looked pretty easy. Just slide jump, press jump again at the wall, and... Okay, this is going to take longer than I thought. Well, the hours went by as I struggled to learn the right technique. It honestly felt strange to be so bad at movement because it was something I was good at in Warzone 1. Was wall bouncing. Now, it looked with this new movement skill, I felt ready to play against some real players. But after a lot of failures, I finally started to
to get better, and I could hit wall bounces from all different. हेलो आ रहा और अच्छा भाई हाँ BBC हुमस साहब दिल्ली की वीगन वैलिडाइट कहीं तो चुसम्बा तो नहीं नहीं क्यों भाई बाकी भूसंबा ये वीडियो चालू कर दिया इस ला ला भाई ला तेरे ला में पड़ा हुआ है लावारिस की तरह ला देख कुत्ते की तरह से पड़ा हुआ है ला मेरे भाई पैडी गिरा के रख देगा चाट ला ला यार नींद आ रही यार। सो जा भाई जा सो जा तेरा एपेक्स हो गया तेरा वैलोरेंट हो गया तेरा जीटी हो गया क्या बोल रहे अरे थोड़ा हो गया मेरा हो रखा है जीटी अगस्त से तू बता नहीं हुआ होगा इसका पक्का अगस्त से बोलना भोसड़ रुक जा एक सेकंड हाँ क्या बोल भाई क्या तेरा जीटी हो गया तेरा हाँ हो गया हो रखा है इसका मार्केट का 2 GB रह रहा है अच्छा भाई अरे इतनी यार कहते पता है इस वीडियो से बहुत बहुत कर रही है मैंने पता है इसकी ऑलमोस्ट हर एक मूवमेंट में ऐसी ऐसी मीम डालूंगा नहीं बहुत करी है ये चीजें भाई 0 GB रह रहा है मेरा 0 GB बस वो वेरीफाई फाइल होती है ना कर ले हो जाए जैसे तो फिर ये जीटी चालू करते हैं देखो भाई मैंने जीटी में वीडियो देखी तो है ना किसी भी वीडियो में मेरे को ये तो नहीं पता मिशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं पर ये चीजें पता चली कि भाई जीटी में ऑनलाइन में 3-4 चीजें हैं एक तो या तो हम खुद का बिजनेस कर सकते हैं बिजनेस वगैरह जैसे रियल लाइफ में हो रहा है ना पूरा उसे रियल वर्ल्ड की तरह खेलें रोल या प्ले फिर है वो उसमें मिशन या फिर अबे नहीं नहीं रियल वर्ल्ड की तरह मतलब रोल्स नहीं बोल रहा मैं हम अच्छा बिजनेस मतलब नॉर्मली करे ना हाँ मतलब वही मतलब और शिष्टि से हाँ वही और वाला सिस्टम हाँ ठीक दूसरा एक चीज है हम हाइस्ट कर सकते हैं काफी सारी हाइस्ट है जीटी में अवेलेबल वो ढूंढनी पड़ेंगी हमें पर वो थोड़ा टाइम वही लगता है देखते हैं ना रुक जा मैं ना हाँ कैमरा लेके आया तो काफी सारी हाइस्ट कर सकते हैं और मिशन है काफी सारे मिशन हैं अलग अलग टाइप की एक नहीं काफी सारे मिशन हैं और काफी रेसिंग्स हैं रेसिंग्स हो गया रेसिंग्स में अलग अलग टाइप की रेसिंग है एक रेसिंग है मतलब इसमें ना हमारी उसमें कार है ना कार में बंदूक होती है तो सामने वाले की कार उड़ा सकते हैं वो काफी फन एरिना वाली रेसिंग होती है और ये 5-6 चीजें कर सकते हैं बस भाई अब ये अब मेरे को ये नहीं पता ये एक्सेस कहाँ से करते हैं क्योंकि इसकी वीडियो मेरे को नहीं मिली मैंने काफी ढूंढा तो देख लो भाई अब ये हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या करना है पहले तो क्या करना है वो डिसाइड करना पड़ेगा हाइस्ट वगैरह उसके बाद उसी हिसाब से चीजें ढूंढते हैं समझ रहा तुम मार्कस आगे आगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे हम जा दे जी बे तू गया डिस्कनेक्ट हो गया तू बंद कर ले कैमरा बॉट मन नहीं कर रहा यार तुझे किक करना पड़ेगा रुक कर लिया भाई कैमरा बंद साला चुम्मी देता है बे गंदा क्या चुम्मी देता बता भी तेरे को ये बोल रहा मेरे को अगस्त से प्यार है ले भाई मेरे को शक तो आ रहा था हल्का
हाँ वही वही वही। पर भाई मेरा नाम है अगदूमी, मैं तुम्हें दूंगा एक चूमी। देख इसने भी कर लिया, नहाया तक नहीं पहले सुबह रात को। देखो समझा, देखो क्या समझा। तेज शक्ल देख के समझ गया मैं। क्या करूँ नहा के भाई, इतनी जल्दी सही जिम बात से है, आके सही बात, नहाऊंगा। सही बात। जिम में वी देखे तीन हैवी वेट मार दे। रुक, कौन सा कैसे बैठा हुआ है ऐसे भी प्रद्युमन की तरह। बहन चो, बहन छो। इसकी खून में तो नहीं, इसकी नसों में तो खून दौड़ रहा है। यार वो पड़ी था यार, कुछ भी बोल। इसकी नसों में तो कुछ भी खून दौड़ बोलो रहा भाई। है। चल भाई स्टार्ट कर दे, 1 घंटा तो GTA स्टार्ट होने में ले लेगा। सपोर्ट मेरा होने तो दे। कुछ और खेलना है तो बता। फाइल वेरीफाई हो रही है उसकी। मैंने तो कर दिया गेम स्टार्ट। तेरे को रिकॉर्ड कर रहा है कंचड़ वो। फोटो ले करने रहा दे हूँ भाई। भाई, तेरा फोटो ले रहा तेरा है कंचड़ नहीं। वो। रॉकस्टार गेम्स अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू प्ले अ ग्रैंड थेफ्ट। हर्षित बागुल, इसको भेजना पड़ेगा। चंद्रमुखी, नो 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 नो। नखरा तेरा नहीं। यार मैं ना जब तक ये गेम स्टार्ट हो रहा है मैं थोड़ा सा हक के आता हूँ, थोड़ा सा बस। नहीं भाई पूरा थक गया, वैसे भी गेम में थकता ही है तू। ठीक है भाई। रोने पे आ गया भाई वो, ऐसे मत बोल। भाई डेफन कर दिया। डेफन तो करेगा ना, उसकी पॉटी की आवाज ना आती, वरना गिरते की आवाज भी आएगी। माइक लगाएगा उधर, माइक लगा के और क्या जाएगा। तो वैसे भी ज्यादा तो है। छी भाई। भाई 50 व्यूज हो गए। कंचड़ जाती बोला क्या 50 व्यू हो गए। और पंचाइयों हाँ। दूसरी वाली वीडियो पे 350 होने वाले हैं। हाँ ना, पर सूरज पे लग। आज वो मनाएंगे रात को थंबनेल अवे रियल। आउट का 8:30 बजे तो वो है ना हमारा वापस आज मैच, कि नहीं? अरे नेवर 8 माइंड, बजे आज है थोड़ी बॉट, है। वो तो खेल लिए थे दिन सारे। अरे हाँ। उसे हरवा भी दिया था ये। देखो उसने बोला ब्लैंक्स ने कुछ, क्या बोलो? उसका मैसेज आया होगा ना कोई तो। किस क्या चीज के हिसाब से? बट ट्रैट कैट बॉट एजेंट सिलेक्शन क्या क्या करना है वो हाँ। आया ना। हम्म। भाई ने पूरा चार्ट बना के भेजा नाम भाई समेत। तो रेस खेलता है कि सिर्फ रेना? रेस खेलता हो ना भाई, वो आईडी पे नहीं बॉट, अनलॉक। वो नहीं आज भेजा है कुछ। आज कुछ नहीं भेजा, बस कल रात को 1 बजे मैसेज किया था, माइनक्राफ्ट खेलता है क्या तू? और हाँ। पर सूरज पे लगे दाग ना। आ! मेरे को भेजा उसने एक चार्ट बना के। क्या भेजा? ब्लैंक साइफर, अक्षय ओमन, मार्कस काय, इंस्टिंक्ट जेट और रेना, अगस्ता रेज। वो बोल रहा था कि, क्या बोल रहा था, रुक। भाई फिर ये मार्कस काय कैसे खेलेगा? एक काम करना, इंस्टिंक्ट को इंस्टिंक्ट से खेलने देना, तो शाइनी एस वाले आईडी से खेलना, और मार्कस वो अपनी आईडी से खेलना दे। मार्कस के खुद के पास स्काई नहीं है। नहीं है तेरे पास? नहीं स्काई कहाँ से आएगी?
तो मेरे को तेरा अकाउंट दे दे, तू गनशॉट का अकाउंट ले ले, गनशॉट को मेरा ये इंस्टिंक्ट वाला दे देंगे। ऐसा ही करना पड़ेगा। वो तो जेट ही खेलने वाला है वैसे भी। जेट और रीना दोनों है उसके अंदर। रेना भी खेल ले अगर उसको खेलना रहेगा बात तो है। गाइस ये फिर हगवाएगा पता मैच, साला टॉप 20 की जगह सीधा हमें बॉटम 100 लेके जाएगा बॉट कहीं का। क्या पता भाई, वो तो सेकंड वाली टीम अच्छी थी पता है, थोड़ी थोड़ी अच्छी थी। बेकार थी। बेकार तो थी बट थोड़ी तो ठीक ही थी पहले वाले से, पहले जो अपन ऐसे डोमिनेट वाली जीत रहे थे ना। मैं जेट होता था ना उस गेम में, सालों को पहले ही उड़ा देता आधे बंदों को तो। भाई हम वैसे खेलने लग जाए ना कि जैसे हम रैंक में खेलते थे हम दोनों। हाँ फिर गए भाई वो दिन ना, हाँ गए था थे। ना। अभी अभी क्या कुछ ऐसा मकसद लगता ही नहीं है कि कर लो थोड़ा पुश पुश, ऐसा कुछ मजा ही नहीं है मैं कर। मेरा एजेंट खेलता ही नहीं हूँ, रासो अकेले लग जाता हूँ। बॉट जैसा। अबे यार ये अकाउंट हर्षित से मांगना पड़ेगा, रुक। हेलो भाई, सो गया? सुन ना, मेरे को वो देना GTA का। अरे नहीं, बता पता नहीं मेरे को क्या है। आदित्य बागुल, आदिल है क्या, आदित्य? हाँ, और नंबर है? यूजर नेम नहीं, ईमेल बता रहा है इधर तो वैसे। हर्षित बागुल 26@gmail.com। और पासवर्ड नहीं, उधर हर्षित वाला ही जीमेल है दिखा रहा। आदिल बा ADILBAGUL, आदिल बागुल ना, 250216 है ना। रुक, क्या कर रहा है कि डेजी कर रही है? ईमेल नॉट फाउंड और पासवर्ड इज इनवैलिड। ADIL250216 है ना। नहीं है ये, हर्षित बागुल 26@gmail.com। नहीं हो रहा। हाँ हाँ भाई ठीक है। अरे बोर GTA का मांग रहा हूँ मैं, रॉकस्टार गेम्स लॉन्चर। फॉरवर्ड करूँ फिर? भेज रहा हूँ देखो, रिसेट करके बोल क्या है। बोर, रुक अभी। पर सूरज पे, पर सूरज पे लगे, गाना वही है। वाह, सही है भाई, अब बता मेरे को। हाँ हाँ भाई, हाँ भाई बता जल्दी क्या है। ADIL 250, क्या 250 @ क्या पासवर्ड है? हाँ भाई, और कुछ काम धाम नहीं है मेरे को, वेरीफाई। और कुछ काम धाम नहीं है मेरे को, हो रहा है, रुक। वेरिफिकेशन मांग रहा है, हो गया आई गेस। भाई मेरे हिसाब से कोई और गेम खेलना पड़ेगा, मैं मेरा गेम नहीं खेल रहा। हो रहा है, लोड हो रहा है, हो गया होगा। हाँ हो गया, चल छोड़। हाँ ठीक है भाई, बोल क्या बोल रहा है? मेरा गेम नहीं चल रहा। क्या हो रहा है? उसमें लिखा है कैन नॉट इंस्टॉल प्री रिक्विजिट, प्लीज ट्राई री इंस्टॉल इन द गेम। मेरे को लग रहा है वो करना पड़ेगा री इंस्टॉल। मुर्गा मोबाइल वाह। तो फिर सॉरी खेलना पड़ेगा मैं। क्या खेलना है फिर? एक सेकंड रुको।
इसका वीडियो क्यों नहीं चला? ये 1 सेकंड रुक बोला तो मुंह खुला ही नहीं इसका। हम खोले बोलता है भाई। गांड से बोलता है गैस। शक्ल देख इसकी शक्ल देख। क्या बोले भाई? जी करदा दिला दो तेरे। बुर्ज खलीफा। क्या भाई? अच्छा बुर्ज खलीफा मेरा खलीफा ले ले। अच्छा है। अच्छा भाई नहीं चाहिए बुर्ज खलीफा तो। देख लेगा इसका क्या बोल रहा है तेरे को। चल गया मेरा गेम। संभाले भाई, मेरा तो इसके ऊपर अटका हुआ है। रॉक स्टार क्या है ये? थोड़ा सा टाइम लेगा, गेम तो मेरे चल गया, स्टार्ट होने में टाइम लेगा। इन्फिनिक्स इन्फिनिक्स क्या नाम है इसके फोन का? इन्फिनिक्स। हाँ ए, 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 ए। कौन देख रहा है रील? रील ये और कौन? ये बंदा। अब 2 बार सेम रील देख रहा है बॉट। भाई कुछ होगा उसके अंदर ऐसी जो उसको खड़ा हो। या मेरा कद भले ही 5 फुट का है, लेकिन मेरी जुबान 10 फुट की है और हाथ 20 फुट का। मेरा कद मेरा तो हो गया भाई, मैं ऑनलाइन जा रहा हूँ सीधा। Now that I know ये। आ जाओ तुम लोग, आ जाओ। मार्केट से स्टार्ट हो गया 96%। हैं? हाँ पहले राइट कर रहा था, अब रीड कर रहा है। 6 की 86। 95। तो ऐसा करे आज फिर एपेक्स खेल लेते हैं। एपेक्स या कोई और गेम, या पेसिफाई GTA 5 कोई और गेम खेल लेंगे। जो बोलना है बोलो, मैं फट से बर्तन रख के आया, तेरा एडिशन बना लेना तुम, ठीक है? जो बोलोगे वो कर लेंगे। ठीक है अगस्त से बता। मेरा तो GTA 5 फिर GTA कभी और इसके करें, ऊपर अटका हुआ कल है। करें। खेल सकते, कभी भी खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अभी क्या खेलना है फिर? अभी कोई गेम डिसाइड कर, उसके बाद मैं बताता हूँ कि अभी पैसिफाई पेसिफाई या खेलना है क्या? एपेक्स। पैसिफाई पेसिफाई खेलने का मन नहीं कर रहा मेरा। नहीं खेलना तेरा मन? अब देखते तो हैं फिर तो यार। एपेक्स ही बचा। फिर एपेक्स या वैलोरेंट। वैलोरेंट तो नहीं। तो एपेक्स। हाँ चल तो ऐसा करते हैं। GTA 5 के लिए ना टाइम लेके खेलना पड़ेगा। कल संडे है ना, कल थोड़ा जल्दी आ जाना सब लोग। हाँ GTA 5 पे टाइम लेके खेल पाएंगे, वरना GTA 5 तो खेल ही नहीं पाएंगे। एपेक्स ही करते हैं आज। चलेगा। अब मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा गेम काटने में, तो एपेक्स स्टार्ट कर ले अपना। हो रहा। खोलो। क्या? कुछ नहीं, टाइम पास बोलो। हाँ नहीं ना आया हूँ। क्या है? अरे नहीं खाना, नहीं खाना। नहीं 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 नहीं। अरे अभी नहीं रे बाबा, अभी तो बिल्कुल नहीं। बाद में बाद में बाद में। क्या डिसाइड किया? हाँ एपेक्स ही चालू करते हैं। मतलब नहीं, GTA 5 खेलने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, गेम स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, आधा घंटा इसमें और वेस्ट हो जाएगा, तो हम खेल नहीं पाएंगे। इसलिए एपेक्स चालू करते हैं। कल खेलेंगे GTA 5 थोड़ी टाइम देर पर, बाद। जल्दी आ कल जाइए कल। कल संडे है। कल 1 बजे आ जाना। 1 बजे क्या कल बोलते हैं, जिम के बाद। जल्दी स्टार्ट कर देंगे। और तेरे होली का कुछ सोचा? होली वाले दिन कुछ करना है? GTA 5 होली वाले दिन ही होली स्पेशल GTA 5 की वीडियो आएगी। होली वीडियो स्पेशल। आएगी। हाँ उसके अंदर हाँ कुछ करेंगे जिससे उसका होली स्पेशल बने। GTA 5 के अंदर। ठीक है तो फिर एक काम करें, GTA 5 की रिकॉर्डिंग कल करते हैं, ठीक है? मैं आज YouTube पे देखूंगा कि क्या मॉड वॉड डाला जाए कि GTA 5 के अंदर मेरे पास गुलाल गुलाल आ जाए। वही मैं, GTA ठीक 5 है। में तुम इजी पीजी गुलाल वुलाल सब ला सकते हो GTA हाँ 5 मेरे में। को, हाँ हाँ वो बात तो है, ठीक है। तो फिर कल हमें थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, इसलिए आज देख के रखिए, फिर कल थोड़ा जल्दी आएंगे। आज पहले पहले करके से रखेंगे गेम इसलिए। वगैरह ना चालू करके देख हाँ लेना।
गेम हाँ मेरा तो चालू हो गया, ठीक है। हाँ, कल मैं वो करेंगे, होली स्पेशल रिकॉर्ड करेंगे, फिर मैं कल रात को ही एडिट कर दूंगा, फिर होली के दिन मैंने उसको अपलोड कर देना है। धुलंडी मतलब परसों की है ना, मैंने उसको अपलोड मार देना है। दरवाजा बोला अमीगो। गुलाब जैसा खिलल बाड़ू भवरा से मिलल बा। इसका देख कैमरा कैसे अटका हुआ है, करत दिल कैमरा पे मेरा क्या बोलते गेम ही अटक गया था, मैंने गेम कतल काटा है। बाड़ू। तो हो गया था, मेरा गेम स्टार्ट हो गया, मैं तो आ गया, बाहर भी आ गया ऑन करके। ओ ललबाड़ी। आप ठीक है? अरे ये क्या व्रेथ है कितने यार, टाइम मेरी तक आदत रहेगी? नहीं है पता है कुछ पहनने की, और मेरे को रिकॉर्ड करने की वजह से टी शर्ट्स पहननी पड़ती हैं। बनियान पहन ले, कौन तेरे को देख रहा है? भाई बहुत बंदे देखते हैं। आई मीन वो क्या फर्क पड़ता है, ये बोलना चाह रहा था मैं भाई। कैमरा में कुछ अरे दिखता था है नहीं। अरे फिर नहीं भाई, दिखता है, लो इतना तो दिखता है ना कि पहना हुआ। ले देख रहा बाल, बाल देख रहा कैसे बना रहा भाई, बाल देख फट से देख। ला ला ले जितना ही कह दे, कितना ही कह दे, अरे बिगड़ के बाल हट। डोनाल्ड ट्रम्प जैसे तो बाल है इसके। जैसा हिलल बाड़ू। क्या बोल रहा भाई तू? चालू हो गया ये ललबाड़ी ललबाड़ू न न न न न न न न। कौन कौन ललबाड़ू है ये? मेरा सूरज निकले। Another version of me. कितना ही कह दे। जहाँ चैन मिले मन को, जहाँ चैन मिले मन को, वो द्वार तुम्हारा है। जहाँ चैन मिले मन को, ले मेरा डिस्कॉर्ड रैंडमली चल जाता है, रैंडमली बंद हो जाता है। जहाँ चैन मिले मन को, क्या इतना वो बुरा द्वार तुम्हारा ये क्या स्टोरी भेज रहा है हंसते मेरे को। है। टाइम पास। अब बहुत है तेरी भाई तू तो। दुआ मेरे फोन को मैं वीडियो कैसे मेरा, बनाऊं? मतलब इसके अब लिए तेरी दुआ स्ट्रीम। वेबकैम के लिए हाँ देयर इज एप्लीकेशन कॉल्ड एलगाटो कोई कैम आई गेस। तो सहारा वो क्या कुछ पेड वेड है क्या? है। नहीं नहीं, आईफोन्स के लिए फ्री है। रुक जा फिर मैं मेरे वो लेके आता हूँ, केबल लेके आता हूँ आईफोन का। अरे करना उसको पड़ेगा टाइम ना लगेगा, कनेक्ट। पीसी में डाउनलोड करना पड़ेगा, वो पीसी में डाउनलोड करना पड़ेगा वो ऐप। हाँ कर लूंगा ना, 2 मिनट लगेगा ना। ला टाइम नहीं है क्या अभी? 3 ही बज गए, जाने दे छोड़, कल करता वही ना। अरे मेरा टास्क मैनेजर खुल जाए तो मैं कुछ करूँ। हूँ। वैसे मैं 2 मिनट में ला सकता हूँ। ला भाई ला ला। लेके आता हूँ, रुक। एपेक्स स्टार्ट किया तुम लोगों ने? बाप रे 33 डिग्री पहुंच गया दिल्ली में इतनी जल्दी। क्या चीज? 4 दिन पहले तो 20 डिग्री टेम्परेचर था, साढ़ा 33 पका दिया इतनी देर में। अभी तो दिल्ली देखिए का गर्मी देखिए टेम्परेचर भाई, बहुत फक्ड अप है भाई, एकदम इस बार की गर्मी लग्जरी देखिए एकदम गांड, टेम्परेचर। हाँ गर्मी देखिए गांड मारेगी इस बार, देखिए इस बार सब बहुत, इस बार पता है वो कही है वेदर रिपोर्ट आई है कि इस बार सबसे ज्यादा हॉटेस्ट समर है ना 2024 में ही आएगी। आ जाएगी भाई, हम तो एसी लगवा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। गांड मरेगी भाई देखिए इस बार।
मैं तो मेरे ही कमरे में एसी लगवा के बैठ जाऊंगा। मैंने तो लगवा रखा है। हमने शिफ्ट किया था ना, जब से जमीन पे ही पड़ा हुआ है वो। जल्दी आ एपेक्स जल्दी आ। अरे भाई ये कुछ करे टास्क मैनेजर तो कुछ करूं। अब किया इसने काम, बॉट कहीं का। गुलाब जैसा। ये वाला गाना सुना मैं कल, जहाँ चैन मिले मन को है वो द्वार तुम्हारा है, नहीं अब तेरे सिवा मेरा कोई न सहारा है। भजन है ये, गाना नहीं है, भजन। आ गया। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई। हंस क्यों रहा है हाय भाई? हाय छी यार। क्या हुआ? ये देख भेजू तेरे को। कौन सा भाई? एलगाटो? हेलो मार्कस, हाँ कौन सा ऐप? एलगाटो कैम करके है शायद। मेरे पास लिंक पड़ा था क्या उसका, देखो जरा। ईपॉक कैम है भाई। मैं रुकना। कार्निवल? भाई बात बता, कोई फोन से ऐसी फोटो ले सकता है क्या? आ गया ये देख। नहीं मिल रहा है उसका लिंक मेरे को। मेरा वो EPOC देखना। कैम वेबकैम फॉर मैक एंड पीसी। अरे मैं तेरे को भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा भाई। तेरा कैमरा नहीं चल रहा, क्या दिखाना चाह रहा है तू? चल कैमरा तो चल रहा नहीं है, रहा। चल तो रहा है। मेरे को क्यों नहीं दिख रहा? ये दिखा क्या रहा, फोटो ये है ये? दिखाना चाह रहा हूँ। ये फोन से खींची है भाई, इतनी मस्त लग रही है। एक्चुअली उसमें ज्यादा अच्छी लग रही है। अब दिखा? इस टाइप की फोटो ले सकता है कोई फोन से? नहीं, फोन का सेंसर खराब हो जाएगा।